चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते शारशत देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषाधिकाश्यते स्थान पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, thank you very much for joining. And I heard like how you are doing so nicely. Bhubaneswar and these are different parts. All of you, them are from from Bhubaneswar only. Preaching at Bhubaneswar only, everyone. Most of the students from Bhubaneswar. So you all Prabhuji, are. I am from Bihar. I am from Bihar, Prabhu. You are from Bihar, Ritesh from. So, but Yes, you are sir. staying in Bhubaneswar, eh? Yes. Pramod, कहाँ से हैं? From Bihar, Prabhu. Bihar, but staying in Bhubaneswar. Okay. So today we are going to discuss about mood and mission of Srila Prabhupada. So like we see that how we all got inspired by reading the writings of Srila Prabhupada. Like most of us, even consciousness. We should continue in English now, bro. As your best. Hindi is also okay. They understand Hindi, yeah? जी ब्रो जी. ठीक है, दोनों ही बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलेंगे. Okay, so read Srila Prabhupada book, and Srila Prabhupada books, they only inspired us to come to Krishna consciousness. So the power of associating with Srila Prabhupada, we all have this. We all have the experience of associating with Srila Prabhupada through his books. So when we read Srila Prabhupada books, we will come to know about this mood and mission of Srila Prabhupada. And as a preacher of Krishna consciousness, we should know the mood and mission of Srila Prabhupada, or the mood and mission of the acharyas, or the parampara we are following. Just like we are following the parampara, Gaudiya Vaishnava parampara. So there are different disciplic successions. Different acharyas are there. But if we are connected with Gaudiya Vaishnava parampara, then we must know the mood and mission of the acharyas, those who appeared in this parampara. So what mood and mission stands for? कोई guess करना चाहेगा? What does mission means? If we say the mission of Srila Prabhupada, so what do you understand by this word, mission of Srila Prabhupada? Anybody would like to share? Yes, Anshuman bro. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Prabhuji, mission is to spread the Krishna consciousness and to connect more and more devotees. ठीक है, ये तो mission है, लेकिन what does mission stands for? Yeah, mission stands for achieving what is a goal we want to achieve, or what is a ultimate thing we want to achieve through preaching. That would be the mission of preaching. And what would the mood? Mood क्या होता है? एक होता है काम को करना, काम को अचीव करना, सक्सेस अचीव करना. एक होता है वे और एटीट्यूड टू अचीव इट, है ना? क्या मनोभाव था उसको अचीव करने के लिए, है ना? So mode and mission means what Prabhupada want to achieve, or what Prabhupada want to convey, or for what Prabhupada had started this Krishna conscious movement. And mood is what should be the mood, what was his inner
What was his inner thought or inner attitude for achieving this mission? So both this mode and mission of Srila Prabhupada is well explained or discussed or can be understood through his books. Just like how many of you read Lilamrit? Srila Prabhupada Lilamrit. Did you read Srila Prabhupada Lilamrit? किसी ने पढ़ा है आप लोगों ने? कौन-कौन पढ़ा है? Because this is very important. Srila Prabhupada Lilamrit is very important. Yeah, senior devotees they have it, but for students also, I will recommend you should read Srila Prabhupada Lilamrit. Because when you read Srila Prabhupada Lilamrit, then you will actually enter into the mood of Srila Prabhupada and mission also. And you will see that how Srila Prabhupada, what was his earlier life, what was his struggle for starting preaching, he was so much desperate for preaching, how he was so much surrendered to his spiritual master. So by reading Prabhupada Lilamrit, we will develop this. We will able to understand the mood and mission of Srila Prabhupada completely. When we read Srimad Bhagavad Gita, in the introduction only, when we go through the introduction of Srimad Bhagavad Gita, then we will come to understand the mood and mission of Srila Prabhupada. So we can do a little exercise. तो मिशन समझ में आया? मिशन और मूड का अर्थ क्या होता है समझ में आया ना? मिशन मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं और मूड मतलब क्या क्या मनोभाव है या कैसे अचीव करना चाहते हैं उस चीज को, है ना? तो आप लोग भगवत गीता है, ये है भगवत गीता. Okay, so what I will do, somebody can share. You can share, Guruji. I have made you host. Okay, ठीक है. स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, Guruji. Okay. Preface of Bhagavad Gita. In the preface of Bhagavad Gita, when we'll read, we'll come to know the mood and mission of Srila Prabhupada, which he expressed in Bhagavad Gita, in the preface of Bhagavad Gita. Okay. मेरा स्क्रीन विजिबल है ना ब्रो? Yes, Guruji. Okay, just डेटाबेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है गुरुजी. डेटाबेस दिख रहा है ना? Yes, Guruji. It's visible. So when we read this preface of Bhagavad Gita, then we will understand the mission of Srila Prabhupada. Mood and mission both. है ना? तो Ramanand Prabhu, you can read. Yes, Guruji. Preface. Originally, I wrote Bhagavad Gita as it is in the form in which it is presented now. When this book was first published, the original manuscript was unfortunately cut short to less than 400 pages, without illustrations and without explanations for most of the original verses of the Srimad Bhagavad Gita. इसमें क्या In हुआ all था? of I will tell, like when Srila Prabhupada wrote this Bhagavad Gita, so when this publication was to happen, क्योंकि बहुत मोटी थी भगवत गीता, तो 1000 पन्नों की भगवत गीता, 1000, हाँ, तो बहुत मोटी भगवत गीता थी, तो उसको पब्लिश करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था. तो जो फर्स्ट पब्लिशर था मैकमिलन, उसने कैसे पब्लिश किया उसकी भी स्टोरी है. ब्रह्मानंद प्रभु ने उसको पब्लिश कराया था, और ब्रह्मानंद प्रभु मतलब उसके लिए बहुत प्रयास किए. ही वॉज नॉट अ पब्लिशर और ही वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस अबाउट पब्लिशिंग,
but because Srila Prabhupada wanted to publish and he made all the arrangements for publishing. तो जब उन्होंने publisher के पास ले गए तो he was not ready to publish whole, तो उसने बोला कि इसको कम करो, then they reduced the pages, है ना, they cut it short, है ना, और उसके और भी बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करी थी उन्होंने उस समय पे फर्स्ट पब्लिकेशन के लिए. Well, later they published the full version. Yes, bro. In all of my other books, Srimad Bhagavatam, Sri Upanishad, etc., the system is that I give the original verse, its English transliteration, word for word Sanskrit, English equivalents, translations, and purports. Yeah, This so this explains the mission of Srila Prabhupada, that how Prabhupada wanted to present Krishna conscious philosophy. Hmm. He wanted to present in a very proper way. Like here you will see, this makes the book very authentic and scholarly. So you will hear Prabhupada lecture, you will find this point, that whenever Prabhupada is speaking, Prabhupada does not speak anything without giving any references. He always speak based on references only. So when we are going for preaching also, we should also use these references from Bhagavad Gita especially. When we are preaching to the newcomers in Krishna consciousness, Bhagavad Gita is one of the most bona fide or one of the most or one of the best book to refer and share. है ना, जब हम नॉर्मल क्लास भी लेते हैं बच्चों की, नए बच्चों की, तो वी कैन कोट फ्रॉम भगवत गीता, दे अंडरस्टैंड इट. हम और किसी लिटरेचर से करेंगे, इट विल नॉट बी सो मच अप्रिशिएटेड. But when we'll do from Bhagavad Gita, they'll find it more relevant and more authentic because they know about it. So Prabhupada's mission was to present, and Prabhupada always wanted from his disciples also that how this Krishna conscious philosophy should not be presented at sentimental process. It should be presented as you can continue. yes, Hare Guruji. Krishna. Not Yes, visible, Guruji. bro. Visible, Guruji. This Mhm. makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. I was not very happy, therefore, when I had to minimize my original manuscript, but later on, when the demand for Bhagavad Gita as it is considerably increased, I was requested by many scholars and devotees to present the book in its original form. Thus, the present attempts is to offer the original manuscript of this great book of knowledge. So Prabhupada when ब्रो मेरा शायद लैग हो रहा है, मैं वीडियो बंद कर लेता है क्योंकि मेरा इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, मुझे लग रहा है. Yes, Prabhuji, your voice इंटरनेट is not गड़बड़ coming properly. Yes. एक मिनट, जस्ट आई विल changing internet connection, so it will just take few seconds. Let me first on my internet. 1 minute, I need to change my internet. Yes, bro, now it's okay na? Bro? Yes, Now yes, it's okay, Guruji. bro, है ना? Yes, Yes, Guruji. yes, Prabhuji. So please continue. I was telling about this point. When Prabhupada wrote first Bhagavad Gita, wrote his first published Bhagavad Gita, then there was initially they were not having any review. तो जब प्रभुपाद की पहली जब भगवत गीता पब्लिश होकर गई, then after reading Prabhupada Bhagavad Gita, many people gave so much appreciation of Prabhupada Bhagavad Gita, है ना, and that letter was published in his yes.
Okay, Guruji. Our Krishna consciousness movement is genuine, historically authorized, natural, and transcendental due to its being based on Bhagavad Gita as it is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world. So great. Thus, present attempt to offer the manuscript of this great book of knowledge with full parampara explanation in order to establish Krishna consciousness more soundly and progressively. So, Prabhupada's mission was to establish Krishna consciousness through his writings. Like प्रभुपाद के आप चैतन्य चैतन्य में परपोर्ट्स हैं जो मतलब जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है कि ही इज अ गार्डनर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो हाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से लिखते हैं कि किस प्रकार से दिस मूवमेंट इज नॉट समथिंग न्यू, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, है ना, एंड ही इज द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लव ऑफ गॉड। And Prabhupada is establishing here that this knowledge with full parampara explanation in order to establish the Krishna conscious movement more soundly and progressively. So Prabhupada wanted to establish Krishna conscious movement as more soundly and progressively. So we should always remember that the Krishna conscious movement should be established based on the teachings of the previous acharyas. जैसे हम लोग आजकल बहुत सारी चीजें नए नए ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं प्रचार में नया नया, बट वो इतना नया नहीं होना चाहिए कि इट शुड सरपास द प्रीवियस आचार्यस, है ना, इट शुड रिमेन विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रीवियस आचार्यस। बाउंड्री ऑफ प्रीवियस आचार्य मतलब हाउ दे हैव एनविजन्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू आउट वर्ल्ड। उन्होंने कैसे सोचा था कि कृष्ण भावनामृत प्रचार होगा, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए अभी रिसेंटली Bhakti Prem Swami Maharaj that Krishna consciousness movement should be based on the books of Srila Prabhupada, preaching from the books of Srila Prabhupada or distributing Srila Prabhupada books, because this is the way Krishna conscious movement started, and this is the way Prabhupada established this movement. So though we are trying to do from different means, through different mediums, to establish Krishna conscious movement, but it should primarily focus on the distribution of Srila Prabhupada books. Means people should be given opportunity to come direct in contact with Srila Prabhupada books. They should be given exposure direct to Srila Prabhupada books. So yeah, parampara explanation in order to establish the Krishna conscious movement more soundly and progressively. So this is important, like whenever we are preaching, we should refer to Vaishnava Acharyas, we should refer to their songs, because these songs, they carry the mood of the previous Acharyas, and they carry the mission of previous Acharyas as well. Like today, to discuss the mood of Srila Prabhupada, we will see one song where we will be able to understand what is his mood of preaching. And preaching is not just making devotees, but preaching is transforming the heart of the person. Some may become devotee by convincing philosophically, but it should change the heart, or it should bring the heart closer to Srila Prabhupada and Guru Parampara. That is something called successful preaching. ठीक है, अभी और कोई पढ़िए, और कौन पढ़ना चाहेगा? अंशुमान पढ़ना चाहेंगे आप यहाँ से, और कृष्ण काश? Yes, Prabhu. Our Krishna consciousness movement is genuine, historically authorized, natural, and transcendental due to its being based on Bhagavad Gita as it is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. Yes, you see, Prabhupada is writing here that our Krishna conscious movement is genuine, historically authorized, natural, and transcendental. Why? Because it's based on teachings of Bhagavad Gita as it is. So Prabhupada wrote this Bhagavad Gita as it is. This is the main mission of Srila Prabhupada. Like there were many Bhagavad Gita. Prabhupada writes there are
more than 700 versions of Bhagavad Gita. But why there is a need to write Bhagavad Gita as it is? Because Bhagavad Gita as it is conveys the mission of Krishna as it is. So Prabhupada wanted have a mission to establish Krishna conscious movement as genuine, historically authorized, natural, and transcendental. So when we are preaching, we should remember this point. And what is our goal? We should make Krishna conscious a presentation so that people can quickly develop the faith. They should recognize it as the authorized movement. जब हम प्रचार करते हैं ना, तो therefore there is a need, like we should be very much expert in science of Bhagavad Gita, and then speaking from Bhagavad Gita. Then when we speak from Bhagavad Gita, people will immediately able to recognize Bhagavad Gita as a bona fide and Krishna consciousness as a bona fide movement. है ना? आप खुद सोचिए, जैसे बाहर के जो स्पीकर्स रहते हैं, जो बहुत सारी कथाएं करते हैं, और जो हम इस्कॉन में कथा सुनते हैं या श्रील प्रभुपाद को सुनते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? क्या उसमें अंतर होता है? तो जी बहुत सेंट्रिक, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी के साथ सेंट्रिक रहता है ज्यादा। कृष्णा कॉन्शियस सेंट्रिक रहता है। और व्हाट इज द डिफरेंस? आप जब बाहर के कथाकारों को सुनते हैं, इस्कॉन में प्रभुपाद को सुनते हैं, व्हाट डिफरेंस यू इमीडिएटली एबल टू रिकॉग्नाइज? फर्स्ट डिफरेंस और द क्विक डिफरेंस दैट यू कुड एबल टू रिकॉग्नाइज? Purity. Okay, purity. Okay. Yeah. What difference we could able to immediately recognize between the outsider speaker and maybe Srila Prabhupada or ISKCON speakers? They don't follow any parampara systematically. Okay. They don't follow any parampara. Yes, Amritesh Karpro. Another difference we find is they don't follow what they say. We follow what we say. Okay. That is the difference. Any other comment about what we see the difference between outside speech or speaker and Follow our ISKCON? Yeah. follow scriptures. Okay, let's hear from others also. If they can speak, they can share. कान्हो संग्रमित संग्रमजीत संतोषती कमल and Jay Krush. Okay, yes, Pramod. Prabhuji, from others only they have no any kinds of logic things, and we can't able to. But they sometimes they present logically also. Okay, सही बता रहे हैं सभी, परंतु सबसे ज्यादा जो डिफरेंस नजर आता है वो ऑथेंटिसिटी में डिफरेंस हम देखते हैं. They don't quote much. वो ज्यादा कोट नहीं करते हैं. They most of the things they speak from their own only. अच्छी बातें बोलते हैं, सही बातें बोलते हैं, but they don't establish their words based on the scriptures. But आप प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए, इस्कॉन में किसी का भी लेक्चर सुनिए, their every statement is followed by शास्त्रिक injunction, शास्त्रिक conclusions कि हाँ, it is coming from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita says like that, Krishna speaks like this. So our duty is also like this, to establish Krishna conscious movement as the bona fide genuine movement, and our genuine or authenticity will be recognized by our understanding of Bhagavad Gita, how we are able to relate our speech with Bhagavad Gita statements. So mission of Srila Prabhupada is to establish movement based on teachings of Bhagavad Gita. So we should always remember, हम जब प्रचार करेंगे तो हमें भगवद गीता से कोट करके या भगवद गीता के माध्यम से we should establish that about this movement. Okay, पढ़ सकते हैं आगे. Krishna Prabhu. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested so much so that the fathers and grandfathers of my disciples fathers and grandfathers of my disciples are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness.
Yeah, बढ़िए further. In Los Angeles, many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Krishna consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Krishna consciousness movement in America, but actually the original father of this movement is Lord Krishna himself, since it was started a very long time ago, but it's coming down to human society by disabling succession. If So you see, Prabhupada is gradually coming to establish that here we discuss about the mission of Srila Prabhupada, that how he want the movement to go on. Now you will see the mood of Srila Prabhupada. What should be the mood to establish the mission, to achieve the mission? This is the mood. Ready? If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace, Om Vishnupada Paramahansa Paribrajakacharya 108 Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Yeah. You see, Prabhupada is telling, I have no credit in this connection. All credit goes to his spiritual master. And how respectfully he is referring to his spiritual master with his divine grace, Om Vishnupad, Paramhans, Parivraj Gajar, Astotra, Shri Srimad, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. So this should be the mood, that how one should, while preaching, one should able to recognize the hand and desire of his spiritual master. Very important. We may be preaching, but is that preaching sanctioned by my spiritual master? Uh, is this the way that my spiritual master wanted me to do? Though I am preaching, I may be successful, but this success may not be pleasing to our acharyas, may not be pleasing to our spiritual master. So one should understand that first one should recognize the hands of their spiritual master in whatever they are doing and whatever they are achieving. If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad Gita as it is without adulteration. So this is important, that without adulteration. Without adulteration means giving anything out of his own. Whatever I have written, that is spoken by the acharyas, that I heard from my spiritual master. I am not speaking anything which is out from Bhagavad Gita, which is not told in Bhagavad Gita. जैसे बाहर के लोग होते हैं, they speak everything in the name of Bhagavad Gita without referring to Bhagavad Gita. And Prabhupada is saying that my credit is that I try to present Bhagavad Gita without adulteration. Adulteration means जितना भगवत गीता में बोला गया उतना ही बताया है। परंतु कई बार कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, तो कई लोग बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसमें मिलावट है। क्यों ऐसा बोलते हैं? कई बार वो पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता के शुरुआत के चैप्टर्स हैं, तो उसमें डायरेक्टली भक्ति के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन प्रभुपाद भक्ति पे ही जोर देते हैं बार बार। लेकिन आप बाद में पढ़ेंगे तो वही जो स्टेटमेंट भगवान बोल रहे हैं शुरुआत के अध्याय में, वही स्टेटमेंट भगवान बोल रहे हैं बाद के अध्याय में, और दैट इज डायरेक्टली रिफर्ड देयर, कृष्ण इज डायरेक्टली रिफरिंग इट एज भक्ति, है ना। तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि ऐसा मतलब जो रीडर है, ही शुड नॉट वेट टू रीड अप टू एंड, शुरुआत में ही पढ़ के समझ जाए द एसेंस ऑफ भगवत गीता इज bhakti. So, but outside people, they are not able to understand sometimes. Yeah, you see, it is almost all the English edition of Bhagavad Gita were introduced to fulfill someone's special ambition. But our attempt in presenting Bhagavad Gita as it is to present the mission of Supreme Personality of Godhead. So we should remember the mission of Srila Prabhupada is same as the mission of the Acharyas, is same the mission of Krishna. What is mission of Krishna?
Krishna's mission is uh, uh, to uh, remember, or to uh, um, yeah, to remind the living entities of coming to his abode. कृष्णा बोलते भी हैं, भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं, कृष्णा bring the living entities back to his abode, है ना। तो कृष्ण का भी मिशन है कि जीवात्माओं को उनके धाम पे लेके आए, हैं, वापस उनके संग में। प्रभुपाद का मिशन यही है, आचार्यों का भी मिशन यही है। The living entity should develop his connection with Krishna. Then, so Prabhupada presented Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. Yes, पढ़िए यहाँ से। Our business is to present the will of Krishna, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher, or scientist, for they have very little knowledge of Krishna, Okay. despite all Yeah, despite all their other their knowledge. other knowledge. Okay. So we'll go a little down. This absolute position of Krishna is difficult to understand for any person who is not devotee of Krishna, or devotee of Krishna in system of parampara. Yeah. This is same. That the mission of Prabhupada writing Bhagavad Gita is same as Krishna's mission. Okay, this was about mission of Srila Prabhupada. We will discuss more on the mood of Srila Prabhupada. There are a few more points about mission. Just okay. So here Prabhupada's mood and mission is Bhagavad Gita. There is one few mood that we found in other places in the writings of Srila Prabhupada. Like Prabhupada writes about that the mission is to take help from Krishna movement for practical understanding. So Prabhupada wanted to present Krishna consciousness as the practical at the level of practical understanding. It's not something sentimental or imaginary, but how this knowledge is practically applicable. And we can see in our life also, when we read Bhagavad Gita, purports of Srila Prabhupada, then we are able to get the practical solutions. Practical means the Bhagavad Gita or the writings of Srila Prabhupada are in such a way that it's very near to it's very near to the actual world. Uh, ऐसा नहीं भगवत गीता है तो the Prabhupada has wrote Bhagavad Gita just मतलब just as a old literature. No, Prabhupada has make it relevant to the present situation. Uh, and Prabhupada writes that we hope that people will derive the greatest benefit by studying his literature as we have presented here. And even one man become a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt successful. अगर ये भगवत गीता पढ़ करके अगर एक भी में आदमी भक्त बन जाता है, तो we will understand that the mission is successful. So Prabhupada mission has been very nicely explained here. We will see. Lastly, we will see one song of Srila Prabhupada. Yeah. Yeah, this song I will just discuss. Not discuss, but I will just show you. So this song is written by Srila Prabhupada.
And he wrote this song in 1965, 13th September. So 13th September 1965 means uh, this Prabhupada started his journey in August of 1965, and 17th September 1965 he reached America. He reached Boston. 17th September. So 13th September is on board. So he was on Jaldut. So he was on the ship and he wrote this poem. This is a very beautiful poem, which shares the mood of Srila Prabhupada. Hai na? So, so he's writing about that. When, oh brother Krishna, I emphatically say to you that when you do this pious act, Srimati Radharani will surely be pleased with you and you will achieve great piety. When you will, uh, and then he's saying, Shri Siddhanta Sach Shuddha Priyati Krishna Shivaya Jar Tulana Shri Shri Mahant Guru Jagatir Madhe Uru Krishna Bhakti De Thai Thai Krishna Tava Punya Have Bhai. So he writes, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is very dear to Lord Gauranga, the son of Mother Sachi, is unparalleled in his service to Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. He is the great saintly spiritual master and who bestow intense devotion to Krishna at different places throughout the world. So Prabhupada is going to preach. You see, Prabhupada मतलब अभी प्रभुपाद का मिशन चालू भी नहीं हुआ है, इस्कॉन नहीं बना है, अभी तो प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे भी नहीं है. But he is writing that whatever is happening or whatever will happen, that is actually by the blessings of my spiritual master. So this should be the mood of preacher. Very difficult to remain in this consciousness. That always recognize the hand of the spiritual master, always recognize the hand of Krishna, Srila Prabhupada in whatever is happening. But this should be the mood that we should carry as a preacher of Krishna consciousness. Tarecha balavan pashyate than than hoy jate gaurangir na पृथ्वी ते नगरादि असमुद्र नदानादि सकले लोए कृष्णना. So what is saying? By his strong desire. Whose strong desire? His spiritual. By his strong desire, the holy name of name of Lord Gauranga will spread. अभी फैला नहीं है, will spread throughout all the countries of the Western world. You see, Prabhupada अभी mission चालू नहीं किए हैं, and he's writing this mission will spread throughout the Western world. In all the cities, all the towns, villages on the earth, from all the ocean, seas, rivers, streams, everyone will chant the holy name of Krishna. So, this is the faith that a disciple, a preacher will only develop by surrendering to his spiritual master. And very difficult. We should take the shelter of the lotus feet of Srila Prabhupada and our spiritual master, because by their mercy only, by their blessings only, we will able to develop this right mood. And then he is saying, Tahali Ananda hoy, tabe hoy digvijay, Chaitanyar kripati sa, Maya dushta jat dukhi, Jagati sabai sukhi, Vaishnavere ichha purna. So he's saying, at the vast mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu conquers all directions. A flood of transcendental ecstasy will certainly cover the land. When all sinful, miserable living entities become happy, the Vaishnava's desire be fulfilled. And last he writes, okay, there are many verses, okay. Okay, I will. You can read this song, very nice song that. Although my Guru Maharaj ordered me to accomplish the mission, I am not worthy of or fit to do it. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, now I am begging for your mercy so that I may become worthy. So he is
asking, I am not so worthy to my spiritual master, but when Krishna will be merciful, then I will become a worthy disciple. So he's asking blessings. Prabhupada is very intelligent. Huh? He writes in another poem that, "Oh Krishna, by your desire only, the whole world is covered in Maya. So if you want to deliver them, then you will have to took away that covering from the living entities." Uh, he wrote in this song, another song he wrote. So this is the mood of Srila Prabhupada. And if we really want to understand the mood of Srila Prabhupada, we can read Prabhupada books thoroughly. By reading Prabhupada book, you will understand his mood and mission both, which again and again he explains in his writing. So as a preacher, we should read Prabhupada books daily. And also Prabhupada Leelamrit we should read. And then you will able to understand the actual mood and mission of Srila Prabhupada. Okay, I will stop it here. If anybody has anything to comment or speak or share, you can do quickly within 5 minutes. I'll wind up the session. Hare Krishna Prabhuji. Oh, Yeah. yeah. Ansuman, please speak. Ansuman Prabhu. Yes, ma'am. Ansuman Prabhu wants to speak. Please raise Yeah. hand. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि मतलब टीचिंग के टाइम पे हमको ज्यादा फोकस रहना चाहिए प्रभुपाद जी के मतलब जैसे वर्डिंग्स है उसके रिलेटेड। तो प्रीचिंग के टाइम पे क्या होता है, अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो उसके टाइम पे हम बता नहीं पा रहे हैं कि भगवत गीता में एक्चुअली क्या दिया गया है, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि हमको इससे क्या मतलब है, कैसे हम लोग चेंज हो गए। तो उस टाइम पे उनसे कैसे डील करना है प्रभु जी? फिर से एक बार बोलिए, आपने क्या बोला लास्ट में? प्रभु जी, कि वो जब जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि उनको क्या मिलेगा मतलब इसको पढ़ के, तो उसका प्रॉपर आंसर कैसे दें? जो आपको मिला है उसको पढ़ करके वही बताइए उनको कि वही मिलेगा। आपको क्या मिला है? प्रभु जी, मैं बोलता हूँ मतलब मैं कैसे चेंज हुआ हूँ, ये हुआ हूँ, तो वो ऊपर से क्वेश्चन बोलते हैं कि आप डिससेटिस्फाइड थे, हम तो सेटिस्फाइड हैं। वही वो प्रभु जी बहुत बैरियर होना था। ठीक है, तो एक्चुअली प्रचार पे मतलब हम किसी बुक या कुछ भी प्रचार करते हैं तो पहले हम समझ सकते हैं कि देखिए बुक वितरण एक अलग होता है, एक प्रचार करना थोड़ा अलग होता है। जैसे बुक वितरण में हमारा मेन फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा बुक जाए, है ना? ठीक। तो हम कम समय में ज्यादा वितरण करते हैं, है ना? और जब हमें प्रीचिंग करनी होती है तो वो एक अलग पॉइंट है, तो उसमें हम बहुत समय देते हैं उसको, आराम से उसकी भी सुनते हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड है उसको जानने का प्रयास करते हैं, देन वी स्पीक। तो देख सकते हैं आप जब प्रीचिंग कर रहे हैं तो अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रीच कर रहे हैं तब तो हमें उसको समय देके उसको अच्छे से समझाया जा सकता है। नया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय अगर इस तरह के लोग मिल रहे हैं तो वी कैन गो टू नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि आप उसमें इतना समय नष्ट करोगे, इतने में आप 10 लोगों को और पकड़ के भगवत गीता या पुस्तक दे सकते हो, है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली टू रीच मैनी पीपल, है ना? और जब हम पर्सनल प्रीचिंग करते हैं इट इज रीच टू सम क्वालिटी पीपल, तो उसमें हम उनको टाइम दे सकते हैं। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो पता नहीं कितना टाइम देना चाहिए। अगर हाँ कोई उस लेवल का व्यक्ति है तो हम दे सकते हैं उसको टाइम, और टाइम देने का मतलब है उसको सुनना, है ना? एंड देन शेयरिंग अकॉर्डिंग टू हिज लेवल, कि उसके उस स्तर पे क्या चीज अच्छी होगी जिससे वो इंस्पायर होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, मैं मूड और मिशन ये प्रीफेस पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझा था, पर आज मैंने देखा कितना डीपली आपने इसको समझा। अच्छा लगा। आप लोगों के साथ पढ़ा तो मैं भी थोड़ा डीपली पढ़ा when we read with devotees it different experience है, जहाँ अकेले पढ़ते हैं it is not so much है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू रामानंद प्रभु। किसी का कोई प्रश्न कमेंट कोई करना चाहता है? मुझे मेरा हरे एक कृष्ण थोड़ा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रमोद प्रभु पहले पूछ लेते हैं, फिर कान्हा प्रभु है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद राम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की हमारे ऊपर
वो मर्जी नहीं रहता, उनकी कृपा नहीं रहती है, उनकी हाथ नहीं रहती है, तो फिर हम कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वॉट एवर विल हैपन, एक और पॉइंट बताए थे प्रभु जी, हमें मिस कर दिया, नोट डाउन नहीं कर पाया। तो थोड़ा एक सा आवाज गड़बड़ा रही है ना, थोड़ा आपकी आवाज गड़बड़ आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ भी सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली प्रश्न था एग्जैक्ट कि व्हाट एवर विल हैपन, मतलब हम क्या चाहते हैं और क्या मतलब होने वाला है। ये इसलिए जब हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की हमारे ऊपर मर्सी रहती है, मतलब उनकी कृपा रहती है, अभी हम कर पाते हैं। इसमें 2 पॉइंट आपने बताया प्रभु जी, वो हमने मिस किया, नॉट डाउन नहीं कर पाते। गुरु की कृपा होती है तो 2 पॉइंट बताए मैं उसके विषय में, ऐसा प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी। किसी को याद है? मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या थे। जैसे कि जब हमारे प्रभुपाद जी जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे बोट में, तो उस टाइम उनके मतलब जो भी वो पर्पट लिख रहे थे, हमारे ट्रांसलेशन तो गीता का, वो उसमें लिखे थे व्हाट एवर विल हैपन, मतलब क्या वो होने वाला है, वो पहले ही नोट कर दिए, तो बता रहे वो करके। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई इसको बताना चाहेगा या कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? प्रभु क्या बोल रहे हैं? हेडफोन हटा लीजिए, हेडफोन से शायद नॉइज आ रहा है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। प्रमोद प्रो, आप उसका मतलब आपके पास शायद कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है, वो हेडफोन वेडफोन का, तो आप उसको सेट करके फिर बोलिएगा, है ना? कानू का तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि श्रील प्रभुपाद का किताबें कैसे, किस क्रम से पढ़े और कैसे पढ़े ताकि हमारा जो पढ़ाई वो इफेक्टिव रहे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट ले सके। हाँ ब्रो, तो प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने का सबसे अच्छा बेनिफिट हम ले सकते हैं जब हम उसको साथ में पढ़ेंगे। और क्रम के लिए तो जो भी आपके जो काउंसलर हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जनरली क्रम यही होता है, छोटी पुस्तकें पहले पढ़ें, जिसमें छोटी पुस्तकें पढ़ने से क्या होता है, हमें एक तो कंडेंस फिलॉसफी पता चलती है, और छोटी बुकें बहुत प्रभावशाली हैं। उसमें एक एक टॉपिक मिलेगा, उसके एग्जाम्पल मिलेंगे, उसकी एनालॉजी मिलेगी, उसके श्लोक मिलेंगे। तो वो एक पूरा पूरा पैकेज रहता है छोटी बुक पुस्तकों का। तो क्योंकि जब हम बड़ी पुस्तक पे जंप करते हैं तो उसमें सारी फिलॉसफी एक साथ दे रखी है ना? तो सबसे अच्छा तरीका है छोटी पुस्तकें पढ़ें, फिर उसके बाद बड़ी पुस्तकों पे आए, भगवत गीता, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितमृत। प्रभुपाद लीलामृत जरूर हम पहले पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में दे रखा है, तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, है ना? और पुस्तकें पढ़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है साथ में पढ़ना। मैं भी अकेले पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि प्रभावशाली तभी होता है जब हम साथ में पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, साथ में पढ़ेंगे तो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस प्रमोद, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। अभी भी गड़बड़ हो रहा है, आप फिर दोबारा साउंड चेक। इधर। अभी भी गड़बड़ है, अभी गड़बड़ हो रहा है अब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए अभी। नाउ क्लियर प्रभु जी। आगे बोलिए, अभी क्लियर है। प्रभु जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि हमारे प्रभुपाद जब जा रहे थे, बोट में यात्रा कर रहे थे अमेरिका के लिए, तो उनके उनके जो पर्पट लिखने का समय जो दो आया था, एक व्हाट एवर विल हैपन, मतलब क्या मतलब होगा, ये पहले ही नोट डाउन कर दिए थे पर्पट में, वो पॉइंट थे वो मिस कर दिए थे प्रभु जी, मैं नोट नहीं कर पाया, मूड रिलेटेड। मुझे समझ में नहीं आया, अमृतेश प्रभु क्या बोल रहे हैं प्रभु, आप समझ? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ रामानंद तो। तो वो प्रमोद प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी मतलब वो अमेरिका जाने से पहले ही, मतलब जैसे प्रभु जी ने लेक्चर में बोल रहे थे बीच में कि कृष्णा कॉन्शियस स्थापित करने से पहले ही
प्रभुपाद क्या मूड और क्या मिशन था वो पहले ही बुक में लिख दिया था। वो क्या पॉइंट थे वो जानना चाहते हैं प्रमोद प्रभु। आपके पास उत्तर है? प्रभु जो हमने चर्चा करी, यही तो पूरा मूड एंड मिशन पे ही चर्चा करी है। प्रभुपाद का मूड एंड मिशन क्या था? हम्म। प्रभु प्रभु जी, मेरा प्रश्न एग्जैक्ट ये है कि जैसे कि क्या मतलब हम किस प्रकार के रिलेशन में डिप्रेशन बिल्ड करें अपने स्पिरिचुअल वो और जो वो है आवाज क्लियर नहीं आ रही है सकते आपकी। हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं। ठीक है, प्रमोद प्रो को मैं बाद में अलग से उत्तर दे दूंगा। अभी रितेश का एक प्रश्न है, उसको लेके फिनिश करते हैं क्योंकि मेरी दूसरी मीटिंग है एक थोड़ी। प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रमोद प्रणाम प्रो, प्रभु आप मुझे रामानंद प्रो से नंबर लेके मुझे पर्सनली बात करें, इसमें हरे आवाज कृष्णा क्लियर है। प्रभु, यस रितेश। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जैसे जो प्रभुपाद की बुक हम लोग पढ़ते हैं तो हमें प्रभुपाद की बुक से क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे पर्सनल लाइफ पे, जो अभी हम लोग लाइफ चल रहा है या फिर स्टडी वगैरह जो भी है। और दूसरी बात है, दूसरी क्वेश्चन ये होगा कि प्रभुपाद जैसी कौन सी हमें बुक पढ़ना चाहिए जो जो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो और मेरे मुझे इफेक्ट करे कि हाँ ये मुझे लगे कि नहीं इसके पढ़ने से मुझे कुछ मतलब बेनिफिट्स हुआ इसको। एक्चुअली प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, देखिए ऐसा कोई मतलब बेनिफिट का मतलब हो सकता है सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है बेनिफिट की, है ना। आप किस तरह का बेनिफिट चाहते हैं वो देखना पड़ेगा। बेनिफिट मतलब परंतु पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़े प्रभु जी की, हाँ, जैसे हम। पर्सनल लाइफ यस पे क्या प्रभु। इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो प्रभुपाद की पुस्तकें एक तो बहुत ही पावरफुल, मतलब दे आर वेरी मच अपीलिंग, बहुत ज्यादा अपीलिंग है वो। जब उनको पढ़ते हैं तो एक हमारे अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी आता है अपने जीवन को लेकर। तो पहला तो है कि हम अपने जीवन के प्रति बहुत सतर्क हो जाते हैं, अपने जीवन को सही से उपयोग करने के लिए हमें एक शिक्षा मिलती है कि मुझे इस जीवन को अच्छे से उपयोग करना है। उसके अलावा जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, विशेष करके मन और इंद्रियों के बारे में, तब हमें पता चलता है कि अगर मन और इंद्रियां हमारे नियंत्रित नहीं होंगी तो जीवन में हम कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भले ही हम कितना भी प्रयास करें। तो उससे हमें पता चलता है कि मन और इंद्रियां नियंत्रित करनी चाहिए मुझे। तो इस तरह से प्रभुपाद की पुस्तकें अगर कोई पढ़ता है नियमित रूप से, इट हेल्प्स देम टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड, मोर regulated, which ultimately helps him to achieve his whatever he want to achieve, है ना। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छी पढ़ाई करना, जॉब प्राप्त करना। तो अगर यस प्रभुपाद की पुस्तकों का आश्रय लेता है, पढ़ता है उनको रेगुलरली, तो वो एक बहुत ही अच्छा वो बहुत ही एक अच्छा डिसिप्लिन्ड और रेगुलेटेड लाइफ जी पाएगा। और जब वो जिएगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी स्टडीज हैं या वट एवर प्रिपरेशन ही इज डूइंग, दैट विल आल्सो बिकम वेरी मच इफेक्टिव, है ना। हमारी एफिशिएंसी या हमारी परफॉर्मेंस कमजोर क्यों रहती है? बिकॉज वी आर अनरेगुलेटेड, इनडिसिप्लिन्ड। बुक्स हम जब पढ़ते हैं तो इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर लाइफ, है ना। तो हम हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यस प्रभु। आप इस पे ट्राई भी कर सकते हैं। डेली आप भगवत गीता पढ़िए या प्रभुपाद की कुछ भी पुस्तक पढ़िए डेली, एंड यू फील दैट हाउ यू आर गेटिंग डिस्टेंट फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर है एक स्टूडेंट की लाइफ में, है ना। अगर कोई यस अपने स्टूडेंट अपनी लाइफ में से डिस्ट्रैक्शन हटा दे, कितना एफिशिएंट हो जाएगा वो, सोचिए आप, है ना। He wastes so much his time on WhatsApp, social media, on illicit activities, sinful activities, है ना, in talking, useless talk. So if somebody read Prabhupada books, then he will become more efficient in his life. तो Okay. जी ये पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों दोनों लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है ना। Spiritual life, it start to grow, it start to begin. Our personal life, yeah, we become more disciplined, we become more regulated in our life. हम समझ पाते हैं क्या सही क्या गलत, किसको कितना करना। एंड माय सेकंड क्वेश्चन वाज बुक्स नेम ऑफ प्रभुपाद। अच्छा, बुक्स ने यू कैन डिस्कस विद योर काउंसलर मेंटर, जो आपको गाइड करते हैं, वो आपको प्रॉपर आपके हिसाब से बता पाएंगे, है ना। ठीक ओके है, ओके। ओके। थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी आई हैव मच। टू लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
Hare Krishna, Srila Prabhupada. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanwad. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. So we are very grateful and thankful to Prabhuji. Prabhuji gave his personal time and enlightened us like how to develop Srila Prabhupada's moods and mission. So thank you very much, Prabhuji, for giving your valuable time so that we will try to get this Prabhupada moods and mission and become sincere in Krishna consciousness. Hare Krishna. Thank you. Premavtar Prabhu की जय, जय। गौर भक्तवृंद की जय।